Hello, everyone. How are you all doing? So, I'm just waiting for some more people to join in, and we'll start off our live session. I'm live right now on the Telegram community and our YouTube as well. And today we are going to discuss why should you attend the bootcamp tomorrow on how you can uh, get or earn 5x more as a content writer. I'm sure all of you are from the background where you have done some content writing work, or you have probably doing right now, you are working in a company where you are giving content writing gigs, and you might be working as a freelancer also. So I have quite a few topics to discuss, and how actually content writing can save you and earn you 5x more. So I'll just wait for a few more people to join in. I have around 20 people live with me right now. On Telegram, a little less participation. I think the team needs to nudge them to join in right away. So, team, do the needful so that people in Telegram also join us. Right? Okay. So, what's on the agenda right now is so today I'll speak about what kind of content are we going to discuss tomorrow in the bootcamp. That's the first, and I'll discuss few of the roles that are already available in the content writing domain that can help you earn 100K or more. And basically I'll help you to develop a sense as to how the market has evolved for content writers, and how much can you earn as a content writer if you are pitching yourself in the correct manner, and what kind of work do you get. So you might be fighting for small gigs like writing uh, you know maybe a landing page for someone, but you are not pitching yourself as that this landing page is something that can convert most of your clients. So most of the time what I have seen that content writers are just focused on giving good English with no errors in punctuations or something like that, or just giving a story, but they're not focusing on the part that what kind of value is this content going to derive for the client that you are giving this maybe a landing page or an email or maybe a WhatsApp message, whatever. So what you have to do is you have to quantify that if I give you a X landing page, you will be able to gain Y number of clients or Y amount of revenue. And just imagine if you are able to derive revenue for people, right, for your uh, maybe the clients, then why will not people start giving you more work and paying you more, right? Now what happens is that we content writers or marketers generally do not associate ourselves to uh, the fact that actually we are driving the revenue. We are just focused on, all right, my job is to give the content, I'll deliver the content, I'll get paid whatever lump sum, maybe 30 paisa per word, and that is it. We are not focused on that particular content, that ओके मैंने ये कंटेंट लिख के दिया एंड आपकी एक पेज पे 500 लोग आ रहे थे और 100 लोग आपका फॉर्म भर रहे थे, बट व्हेन आई रोट द कंटेंट 500 लोग आए और 400 लोगों ने भर दिया. Or maybe I'm just giving you a sense that you should work on uh, the revenue side, or you should look at the data, how your content is adding value to all of the work that you are delivering, right? A lot of questions on, lot of comments on YouTube. I just hi popcorn music, hi Rakesh ji. All right. So I have quite a few people in Telegram also now. So good there. All right. So moving forward,
So I discussed that I will tell you some of the gigs that are available, and so let's take it as a story. Again, you are all content writers, so you love storytelling. So let's take it as a storytelling. So Rahul was an English teacher and wanted to explore content writing. After his first class, he was confused. He understood he cannot be a commoditized content writer, that he must solve business problems to earn more. What does this mean? Now, after his first class, he realized he cannot be a commoditized content writer. Commodity क्या होता है? Commodity is eclairs मिल रही है, that's a chocolate toffee. उसके आसपास सब chocolate toffees हैं. You can't win a commodity market. You will have to be at the same, uh, you know, pricing, and you have to be similar in taste and whatnot. So it's all commoditized. आप वो commodity बन गई, आप वही रेगुलर काम दे रहे हो जो हर बंदा दे रहा है आज की डेट में. कोई एक एक्सपर्ट कंटेंट राइटर भी वही दे रहा है. एंड इनफैक्ट अब एआई आने के बाद तो इवन द पीपल, लाइक यंगस्टर्स जो पार्ट टाइम अपने कॉलेज या स्कूल में काम कर रहे हैं एज अ कंटेंट राइटर, वो भी सेम कंटेंट दे रहे हैं, बिकॉज एआई से सब कुछ लिखवा लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर ऐड किया एंड दैट्स इट, उन्होंने सबमिट कर दिया. अगेन दे आर फाइटिंग इन द कमोडिटी मार्केट. तो वहां पे आपके प्राइसेस हमेशा लो रहेंगे. व्हेन यू आर नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यू आर जस्ट सर्विंग देम. उन्होंने मांगा कि हाँ भाई 4 मैसेजेस चाहिए, आपने 4 मैसेज लिख दिए. एक पैराग्राफ चाहिए कैप्शन का, कैप्शन लिख दिया, दैट्स इट. उन्होंने कहा अच्छा एक ऐड लिखनी है, ऐड लिख के दे दी, विदाउट इवन थिंकिंग व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम और अ बिजनेस गोल इट इज सॉल्विंग फॉर देम. नाउ आप ये कमोडिटाइज मार्केट से बाहर आके हाउ कैन यू बी दी कंटेंट राइटर जिसके पास जाने के लिए लोग विल बी लाइक यार भाई इससे ही लिखवाना है, कुछ भी हो जाए. वो कैसे होगा? नाउ वो ऐसे होगा व्हेन यू विल सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम फॉर देम. बिजनेस प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम लोगों की यही होती है, हमारे को बिजनेस को ग्रो कराना है, उसका रेवेन्यू ग्रो कराना है. एंड वो कैसे करें? नाउ उसमें एक सेल्स होता है, दूसरा होता है मार्केटिंग. और मार्केटिंग के अंदर मेजरली सब कुछ जो है कंटेंट बेस्ड होता है. आपने कैसे नजेस लिखे, आपने कैसा सीटीए डाला, सीटीए इज कॉल टू एक्शन, आपने रजिस्टर कराया, राइट? आपने उसको कितना पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजा कि वो बंदे को लगा अरे हाँ यार ये तो मैं ही हूँ, मेरे को तो ये करना चाहिए कोर्स, राइट? इट्स ऑल मार्केटिंग गेम ऑफ ऑल कंटेंट, राइट? नाउ आपको उसके साथ अलाइन होना है, उसकी बिजनेस प्रॉब्लम को समझना है. लेट्स से अगर let's take an example of skill arbitrage. Skill arbitrage में there are communities, there are 20,000, and there are some communities where we have 50,000 people also. Now in this kind of community, you have to deliver a content that it stands out from a regular update that's going. And आप as a content writer जाओ और बोलो, listen Rudresh, in your community I will post 4 days in a week, correct? Only 4 posts in a week, and from that I will generate a revenue of 5 lakh rupees, and I'll charge you 50,000. मैं अगर आप ये जाके यही सेम चीज मुझे बोलते, रुद्रेश मैं 4 पोस्ट डालूंगा आपकी कम्युनिटी में, 50,000 रुपए दे देना, आई वुड बी लाइक क्यों दूंगा भाई, व्हाई शुड आई गिव यू, राइट? लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन यू हैव अलाइंड योरसेल्फ विद द गोल्स, राइट, विद द बिजनेस गोल्स, मेरा बिजनेस गोल है, मेरे को रेवेन्यू चाहिए, लोगों को कोर्सेज देना है, तो कैसे, राइट? आपने उसके साथ अलाइन किया. क्या अलाइन किया? बॉस आपके 4 पोस्ट डालूंगा, उसके मैं 50,000 लूंगा, बट द अंडरलाइन स्टेटमेंट इज दैट यू विल बी एबल टू गेट 5 lakhs of revenue. It not necessarily be associated to revenue, it can be associated to generating leads as well. You can say that probably you go to my landing page, say सर आपका स्किल आर्बिट्राज का लैंडिंग पेज ना थोड़ा सा लंबा है, आई थिंक उसको शॉर्टन करके उसका कंटेंट क्रिस्प करके, और आपकी अगर लीड्स अभी you have around maybe 500 leads from that page, and the cost per lead is around 200 or 500, whatever, I can bring it down to 100 rupees, right? Now this is again another
a business problem that is existing, and as a content writer you are solving it, you are aligning yourself with the business problem. So मैं थोड़ा बह गया हूँ, बहुत सारे एग्जांपल दे गया हूँ. लेट्स मूव बैक टू राहुल स्टोरी. इंग्लिश का टीचर है, पहली क्लास उसने कंटेंट राइटिंग की ली, उसको समझ में आया कमोडिटी मार्केटिंग में तो फाइट करना बेकार है. आई हैव टू अलाइन माई सेल्फ टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स टू अर्न मोर. सो अब द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट ही हैज इन हिज माइंड इज दैट वो कौन सी जॉब्स कर सकता है, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स कुड ही गेट, व्हाट काइंड ऑफ रोल्स वुड ही प्ले फॉर अ पोटेंशियल क्लाइंट. ऐसा क्या हुआ? आई हैव गिवन यू मल्टीपल एग्जांपल्स, बट स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, कहाँ मिलेगा ये सब काम? ये तो मैंने अपने रेलेवेंस में यू आई हैव शेयर्ड, बट वेयर विल ही गेट सच जॉब्स, वेयर what kind of role he will play to the potential clients? And uh, basically this, if you can answer this question, you will somewhat understand where you can actually pitch your services and what service fit are you. And basically you have to fit into the grand scheme of events of a business. As a content writer, you should be the piece in the puzzle, and once you are in the puzzle, you set yourself in that puzzle, the puzzle is complete and they are on a winning streak, right? That's the kind of person you have to become as a content writer to earn 5x more than you are earning right now. And believe me, our students at Skill Arbitrage are doing this, and they're killing it, whether it be starting their own consulting business on Upwork, whether it be serving some corporate clients, and becoming their MVP in the Gen Z terms, the most valuable player. So अब कोई PUBG भी खेलता है उसको भी समझ में आ जाएगा, I think. All right. So now आप, मैंने कम्युनिटी मैनेजर की बात करी. So what kind of roles can you get? So I'll give you a few examples of content writers who are working from India with the US clients and SMEs. So I went through a profile of a person from Siliguri. Her name is Shreya, and she's working as a community manager. And she's responsible for building and growing and managing the company's community online and engaging with customers through social media. Now, this is a wholesome role where in a community she's managing the community, answering questions, delivering content, and similarly on the social media also she's answering content. So uh, some people might also say that the person is online reputation management. So all of this falls or can be done by a content writer who is good with his content writing skills. And the amazing part about Shreya's profile, who's working as a community manager, is that $90,000 of earning is what she has achieved on Upwork, and she has done only 38 jobs, right? So uh, and she has given her total number of hours that she has spent. So she has spent around 3,717 hours, right? And earned around $90,000. Please mind it, $90,000, right? So if you divide it accordingly, you will see that for every hour that she has invested in working, right? What kind of earning she has? She has some crazy um, earnings, $90,000. So if you just even convert that, it'll be huge amount, right? And that's just as a community manager. I'm not even talking about serious work when you are committing that you will design a landing page that converts and that has lower CPL, right? Now, again, the second role that you can work as is a copywriter, where you write, edit, or you QC the content, and you it can be a website content, newsletter content, social media content, or a brochure, and in fact even ads, right? So we also in at Skill Arbitrage have copywriters who specifically write ads, and we produce ads on that, and then we drive our sales, and that is evaluated on what is the CPL from that ad that was written, right? So you can be called a copywriter or a conversion copywriter or a marketing copywriter, depending on what kind of content you are creating, right? So again, I found a profile of a person from Rajkot. His name is Shubham.
So by the way, I'll be posting all of this screenshots that I have found out on Upwork on the Telegram group, and if you are there in our WhatsApp channel, I'll post it there as well. So you can go through them. You can see the solid proof of these people earning. Like I mentioned, Shrey is earning $90,000, but just by spending 3,700 hours. That's it, and 38 jobs in fact. And now this person from Rajkot, Shubham, he's working as a copywriter and in fact as a head of marketing at some of the uh, projects that he has done. Interesting part that he has done only 4 jobs and earned over $100,000. Imagine 4 jobs, $100,000. Person from Rajkot delivering people in the US, right? Now, what we have discussed, number one is a person who's a community manager. Number two, you can work as a copywriter. Number three, very interesting, very close to my heart, marketing funnel builder, right? Now, what happens is you have heard of top down funnel, socks funnel. You might have heard various abbreviations, and with advent of AI there has been a boom of talking about how you can build funnels. In fact, up to India mein, every if you are a content writer or you are closely related to marketing, you would be getting ads like are funnel सीख लो. So all of this क्या है ये? This is nothing but a subset of content writer. If you as a content writer realize that you are the person who's building, or you are the building block for this funnel, and somebody else who is just telling you and coming and telling you भाई ऐसे लिख देना and earning more than you, pinches, right? Now that's what we are going to solve, and that's what our roadmap is going to solve if you attend our bootcamp tomorrow, right? ये जो बीच में आ जाता है ना लोग, फनल बिल्डर हूं मैं, आप कंटेंट लिख के दो, पैसे मैं कमाऊंगा, ये गैप को खत्म करेंगे. कंटेंट राइटर हूं, फनल बनानी आती है, पैसा मैं ही कमाऊंगा. And that's the roadmap that we'll give you tomorrow in the bootcamp if you attend. So it's a 3-day bootcamp, 3 hours each day, and we'll give you a lot of skills. We'll give you a lot of insights on what kind of opportunity is available. Some insights I'm giving you today so that you can be prepared and you have a mindset that I have to grow, I have to learn, I have to crack this and take my journey 5x faster and earn 5x more. So that's the mindset that we're building today, and we go strong in the boot camp and kill it there, right? So yeah, coming back to marketing funnel builder. So you have to understand, as a marketing funnel builder, you will write and configure email funnels, marketing funnels, with view of increased lead engagement and conversion. Again, अब आप मेरी सारी जो भी मैं प्रोफाइल्स आपको बता रहा हूँ, यू विल हैव अ अंडरलाइन अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम सेइंग आप एक फनल क्रिएटर बनोगे. काम क्या होगा? यू विल राइट एंड कन्फिगर ईमेल्स. यू आर राइटिंग ईमेल्स एनी विच वेज. अभी भी लिख तो रही हो ना, लोगों को लिख के दे रहे हो ना ईमेल्स. ईमेल्स नहीं तो ब्लॉग्स लिख के दे रहे होगे. थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, बट यू कैन राइट ईमेल्स, राइट? But if you learn how to configure them into various softwares and create a funnel out of it, just imagine how much more can you earn. And how will you earn? You will pitch yourself as a person who can increase the lead engagement, conversion, support, and optimize the whole buying journey of their customers. Correct? Now, again, what is my focus is on the problem solving. आपको एक काम आता है ईमेल लिखना, उसके अंदर ऑगमेंट करेंगे कुछ सॉफ्टवेयर्स को जिससे कि आपको ईमेल फनल बनानी आ जाए, और उसके बाद आप सीखोगे कि पिच कैसे करना है, राइट? वंस यू आर पिचिंग, करेक्ट, आपको बिजनेस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पिच करना है. यू डोंट हैव टू पिच मैं कॉपीराइटर हूं, ईमेल सीक्वेंस लिख के दे दूंगा. नहीं, मैं कॉपीराइटर हूं. आई विल राइट अ ईमेल दैट कन्वर्ट्स मोर. आई विल राइट अ ईमेल दैट एंगेजेस मोर. आपका कितना है? 13% है, मैं 23% ओपन रेट लेके आऊंगा. कैसे लाना है वो हम कल बूट कैंप में बताएंगे. सो ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू टीच यू टुमारो.
दीज आर हार्डकोर स्किल्स. विल टीच यू स्टेप बाय स्टेप ये स्किल्स को कैसे अचीव करना है, एंड देन टीच यू स्टेप बाय स्टेप कि इसको फाइनली पिच करके पैसा कैसे कमाना है. नाउ ये सब कुछ जो मैं अभी तक डिस्कस कर रहा हूँ इज बेस्ड ऑन अ सिंगल फॉर्मूला. जो मैं ये सारी कैटेगरीज को डिस्कस करने के बाद फाइनली इन द एंड ऑफ माय लाइफ आई विल शेयर व्हाट इज द फॉर्मूला. राइट. सो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि व्हाट कैन बी योर रोल्स एज अ कंटेंट राइटर और अ कंटेंट कॉपी राइटर. इज दैट you can be a community manager, you can be a copywriter of ads, of emails, of newsletters, of web pages, and then you can finally be third part is the marketing funnel builder, right? So these are three roles that we have discussed so far. अब इसमें भी एग्जाम्पल देख लेते हैं. अब एक रुचिका है, पंचकुला से है ये, ठीक है ना. पंचकुला से गेस करो इन्होंने 16 जॉब्स करी हैं एज अ सेल्स फनल कॉपीराइटर. गेस करो कितना कमा लिया होगा. अभी तक मैंने आपको 90,000 100,000 तक का बताया है ना. फनल बिल्डर में किसी ने अपवर्क पे कितना कमा लिया होगा? गिव मी अ गेस. She has earned around $40,000, और इसने the amount of hours that she has spent on doing these jobs is comparatively very less. Agar she does as much work as Shreya has done, as much hours as Shreya has clocked, right? She would be earning somewhere around $150 right now. So रुचिका एस फनल बिल्डर है, $40,000 कमाए हैं अराउंड 2000 आवर्स इन्वेस्ट करके. नंबर फोर आपका क्या रोल हो सकता है? यू कैन बी अ स्क्रिप्ट राइटर. राइटिंग अ स्क्रिप्ट इन अ क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक प्रोसेस दैट रिक्वायर्स प्लानिंग, रिसर्च, स्टोरी टेलिंग स्किल्स एंड अ वेल रिटन स्क्रिप्ट, and that can help you communicate the message. That's what I said in the beginning कि अभी marketing जो है is all about content, how your content is drafted, how you are sending out your message. It is not into the face कि भाई ले 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 ले, but you are अब मतलब you in a script, as a script writer you can be as creative as getting this guy Rahul Dravid to perform a Shahenshah scene, right? Now that has a recall value, and somebody would have thought it na. Some script writer would have written it, and that script writer is you. But how do you reach there? That's the goal, right? How that's the idea. Now how do you reach there? That we'll teach you in the bootcamp tomorrow. Correct. Now, for an example, we have someone on Upwork called Vidu J. Now, this lady has earned $200,000 just as as a content strategist. $200,000, and she has spent only 4,000 hours, and she's from Jaipur. Are you understanding the opportunity? एक बंदे ने $100 कमाए हैं, $100,000 कमाए हैं, एक ने $90,000 कमाए हैं. नाउ वी हैव अ पर्सन जिसने कंटेंट स्ट्रेटजी से $200,000 कमाए हैं, $200,000, and not even rupees, dollars. And these all people are working from India, and the catch is they're working for US clients. आप अभी तक क्या कर रहे हो? आप इंडियन क्लाइंट्स को ही वही सेम अपनी लोकेलिटी में 4 दुकानों को या शोरूम्स को केटर कर रहे हो, या प्रोबेबली आपने किसी स्टार्टअप को पिच किया होगा. बट डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्टार्टअप्स. आई एम टेलिंग यू, स्टार्टअप को भी अगर आप पिच कर रहे हो, इफ यू नो हाउ टू पिच योर सेल्फ, इफ यू नो हाउ टू पिच योर सेल्फ एज अ बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्वर, you can earn a lot there as well. Lot of my students have done that, right? Moving forward, what is the next role that you can have? Next role you can have as a SEO expert, blog writer, or a link builder. Now SEO expert क्या करता है? वो बंदा डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेंड होता है, उसको अंडरस्टैंडिंग होती है कि गूगल, याहू या कोई भी वर्ल्ड का, वैसे तो ज़्यादातर गूगल ही चलता है, बट मोस्ट ऑफ द आपके जो सर्च इंजिन हैं उस पे कैसे अपने कंटेंट को हायर रैंक करना है, राइट? तो वो रहता है, एंड यू हैव टू राइट हाई इम्पैक्ट ब्लॉग पोस्ट फॉर द रीडर्स सो दैट दे एंगेज मोर, एंड उसके बाद उसका डेटा कलेक्ट करके, डेटा को रीड करके ऑप्टिमाइज करना है एवरी टाइम.
so that you are ranking higher. अब आप लॉ सीखो, स्किल आर्बिट्राज, और हमारा एक ब्लॉग है आईप लीडर्स, उसको सर्च करो भाई। उसके ऊपर अगर कोई टॉपिक हमने दिया है, दैट टॉपिक विल रैंक ऑन द फर्स्ट, मतलब टॉप 3 वाले बैनर में आएगा ही आएगा। वाई? बिकॉज दे आर SEO फ्रेंडली, दे हैव बीन थॉट आउट टू बी as some person has sit down, thought of a SEO strategy and put it out. And who is that person? A content writer. Again, you have a lot of potential as a content writer. You don't have to be stuck at writing letters, emails, and just random pages. You have to align yourself with the startups, align with different clients, उनकी business problem solve करो. You will earn like anything. मैं अभी ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और ये लोग तो एक स्पेसिफिक बंदे के साथ भी नहीं काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग फ्रीलांस. यू कैन ऑल्सो डू दैट, एंड इनफैक्ट आप ये करना शुरू करो, यू हैव अर्न $200,000, उसके बाद you can automate the process, hire more content writers, and have your own full-fledged agency जो content ही provide कर रही है. Are you getting my point? मतलब आप अपना business चला रहे होगे, you are not no more a content writer, but you are a business owner. You have your own consulting firm where you consult high-paying, hyper-growth US startups कि भाई ऐसा content लिखो and it will convert more people, right? And ये सब कुछ, ये high converting landing page, वायरल रील का कंटेंट, और उसके बाद एड्स कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ. सो लैंडिंग पेज वाला स्किल ऑलरेडी आई हैव फ्लोटेड अराउंड ऑन योर ईमेल एंड व्हाट्सएप एंड इनफैक्ट इन आवर टेलीग्राम कम्युनिटीज. सो यू गो थ्रू दीज डॉक्यूमेंट्स, एंड इनफैक्ट इसके बाद आई विल आस्क माय टीम टू स्टैक इट अप. एक लिंक ट्री का लिंक बनाएंगे, सब सारी स्किल्स वहाँ पे डाल देंगे. सो एंड इस लाइव के कमेंट में भी छोड़ देंगे, so that you can go through this all of this and you can understand that इसको सीखना बहुत मुश्किल नहीं है. You just have to be focused, follow the steps that we are giving, and in no time you will be able to align yourself with being a person who solves a problem than just being a content writer who just gets paid 30 paisa per word. Your worth is lot more than that, right? तो अभी तक हमने 5 जॉब रोल्स आपके डिस्कस करे. 1 इज कम्युनिटी मैनेजर, कॉपी राइटर. नंबर 3 इज मार्केटिंग फनल बिल्डर, भाई नथिंग लाइक इट. नंबर 4 इज अ स्क्रिप्ट राइटर, एड्स लिख के दो, क्रिएटिविटी दिखाओ, और तन्मय भट्ट को चैलेंज करना है अपने को, ठीक है. मस्त, ही इज राइटिंग गुड स्क्रिप्ट, राइट? सो हमारा वो टारगेट होना चाहिए कि भाई यहाँ इतना अच्छा लिखना है. नंबर 5 इज SEO एक्सपर्ट, ब्लॉग राइटर और लिंक बिल्डर. सो ये सारी डिफरेंट फील्ड्स क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं? बिकॉज हो सकता है आपने हमेशा से ब्लॉग ही लिखा है. नाउ आप उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या ढूंढ सकते हो? यू कैन बिकम अ SEO एक्सपर्ट. नाउ आपने सारी जिंदगी प्रोबेबली एक एजेंसी में कॉपी राइटिंग करी है एड्स की, या स्टिल क्रिएटिव की एड्स की. आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे अपने क्लाइंट्स लेके आ सकते हो? एजेंसी के लिए तो बहुत कर दिया यार, अब अपने क्लाइंट्स लाओ, अपना पैसा लाओ, कट आके सैलरी क्यों लेनी है? गेट दैट हेफ्टी अमाउंट ना, रिटेनरशिप्स लो. वाई वेट, राइट? नाउ नंबर 6 पे आते हैं, कोल्ड ईमेल आउटरीच एक्सपर्ट. नाउ आपने ईमेल सीक्वेंस बना के अपना कस्टमर जर्नी तो स्मूथ कर दी, लेकिन बिजनेसेस को नए कस्टमर्स भी लेके आने हैं, उन लोगों से भी बात करनी है, उन लोगों को अपना आइडिया समझाना है, अपना प्रोडक्ट समझाना है, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज गुड अबाउट देम. उनको अपना एक हाउ शुड आई पुट इट, एक अथॉरिटी बनानी है कि यस वी आर द पीपल दैट आर गोइंग टू हेल्प यू. वो कैसे होगा? व्हाट इज द फर्स्ट मैसेज? वो कोल्ड ईमेल आउटरीच बोला जाता है उसको. हाउ शुड यू सेंड? सो कोई बंदा जो आपको नहीं जानता, आप उसको ईमेल करते हो तो उसको कोल्ड ईमेल बोलते हैं. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल विल नो अबाउट इट, बट I have few questions on YouTube, so I'm just answering it. So उसको cold email बोलते हैं. So cold email outreach expert is responsible for sending direct emails to potential clients, handling chat, social media pages that enables more potential clients to book calls. So again इसमें आप नए लोगों से नए कस्टमर्स को पिच आउट करते हो और उनको हमारी फनल में लेके आते हो फाइनली. सो यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव कि भाई वो हमारी फनल में घुसेगा कैसे, राइट? नाउ
all of this is a work of a content writer, because खेल तो सारा content का है ना. So you have to you can work in this place as well. अब इसमें भी एक बंदा है मेरे को दिख रहा है अपवर्क पे, हितेश नाम से है, और ये है शर्मा धोपुर से है, टियर 2 टियर 3 टाउन, एंड उसने अभी तक $200,000 कमा लिए हैं. $200,000 एज अ ईमेल मार्केटर, जस्ट इमेजिन. और इस समय पर उसका रेट है $25 पर आवर. आप उसको अगर कैलकुलेट करते हो $25 पर आवर को, तो ऑलमोस्ट आपका आएगा अराउंड 2,250 रुपये, 2,250 रुपीज पर आवर आपको मिलेगा इफ यू आर अ ईमेल मार्केटर, राइट. तो ये कुछ मोटा मोटी 6 categories I have discussed with you as a content writer. What kind of roles, what kind of jobs can you do? And the underlying statement was content writing आपको आती है, उसमें आपको blog लिखने आते हैं, email लिखने आते हैं, whatever. उसमें आप एक स्टेप आगे जाओगे जिसको सीखना मुश्किल नहीं है, जिसमें हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर सीखने पड़े, जिसमें हो सकता है आपको कुछ प्रॉबेबली एक टेक्निकल साइड ऑफ मार्केटिंग सीखना पड़े, विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. और उनको इनफैक्ट हमने डॉक्यूमेंट करके ऑलरेडी आपके साथ शेयर करना शुरू कर दिया है. चेक योर ईमेल एंड व्हाट्सएप. आई हैव शेयर्ड लॉट ऑफ कंटेंट विद यू. इनफैक्ट हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी में रेगुलरली ये हमारा रूल है, दिन में आपको 3 स्किल्स हम भेज रहे हैं. आप देखो, इट्स योर एफर्ट्स नाउ. लर्न दैट स्किल एंड देन फाइनली you pitch to the clients to solve their business problems. The biggest takeaway that you should take away from this live event is that आपको जो है अपने आप को लोगों के, स्टार्टअप्स के, क्लाइंट्स के बिजनेस प्रॉब्लम्स के साथ अलाइन करके उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है एज अ कंटेंट राइटर. एंड इट इज़ वेरी इजी. आई हैव गिवन यू 6 एग्जांपल्स डिफरेंट रोल्स में, एंड अनलिमिटेड एग्जांपल्स ऑन हाउ वी आर डूइंग इट इन स्किल आर्बिट्राज. मतलब बच्चों ने क्या क्या कर दिया है, राइट. तो अब जो मैं राहुल की स्टोरी बता रहा था, उसने ये 6 आपकी तरह मैंने उसको ये 6 बताए, एंड उसने ये देखने के बाद बोला मैं कम्युनिटी मैनेजर बन जाता हूँ. ठीक है, वो मेरे को थोड़ा आसान लग रहा है, मेरे को ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं सीखनी, मुझे ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं करनी, मैं कम्युनिटी मैनेजर बन जाता हूँ. ठीक है भाई, कर ले. 3 महीने में, आफ्टर 3 months, वो 3 क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी काम कर रहा था और $500 कमा चुका था. ऑलराइट. सो 3 महीने में उसने कहा अच्छा ठीक है, कम्युनिटी मैनेजर बनना है, ठीक है, ट्रेनिंग दे दो. ट्रेनिंग दे दी, 3 क्लाइंट्स मिल गए उसको, $500 कमाने लग गए. देन उसने सोचा यार अब ना थोड़ा सा और अपस्किल करता हूँ, बिकॉज अगर मेरा सिर्फ 3 महीने के एफर्ट से मैं 3 क्लाइंट्स फोड़ सकता हूँ और $500 बना सकता हूँ, थोड़ा और पुश मारता हूँ, एसईओ सीख लेता हूँ, कोल्ड ईमेल आउटरीच सीख लेता हूँ, मैं और फोड़ लूँगा यार. मतलब आई विल, मेरी तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगी. तो उसने वो भी सीखना शुरू कर दिया. दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम दैट वी हैव एट स्किल आर्बिट्राज. एंड इनफैक्ट हम ये जो मैंने 6 पार्ट्स डिस्कस करें, इसकी एटलीस्ट एक स्किल हम इन 3 days ऑफ बूट कैम्प में आपको सिखाएंगे, सो दैट यू कैन यूज इट राइट अवे एंड स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स. ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमारा गोल ही यही है. वी हैव टू क्रिएट एन आर्मी ऑफ फ्रीलांसर्स फ्रॉम इंडिया, और यूएस की इकोनॉमी में सिर्फ इंडियंस रूल करने चाहिए एज अ सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो कॉस्ट कम है हमारी, तो वहाँ के कंटेंट राइटर्स के साथ हम बहुत अच्छे से compete कर सकते हैं. एंड अबव ऑल दैट हमारे से ज़्यादा क्रिएटिव तो नहीं है लोग कोई भी. तो दैट वेज बढ़िया है. हम लोग वी विल सर्व द वर्ल्ड. मतलब अभी तक इंजीनियर्स का नाम होता है कि यार इंडियन इंजीनियर्स. नेक्स्ट अप इंडियन कंटेंट राइटर्स रूलिंग द वर्ल्ड. जहाँ पे देख लो, जौन सा डिजिटल मार्केटिंग हेड हो वो इंडियन होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट राइटर्स इंडियंस के इंडिया से इतने ज़्यादा प्रोफेशनल एंड स्किल्ड होंगे, एंड दे विल बी सर्विंग फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी एंड रूलिंग द वर्ल्ड. दैट्स आवर गोल. स्किल आर्बिट्राज से ट्रेन होके जाएंगे एंड
बेस्ट कंटेंट हेड्स, डिजिटल मार्केटिंग हेड्स बन जाएंगे, बिकॉज कंटेंट इज द किंग, whether it be for growth of a company, whether it be for a small segment of digital marketing, right? Now, राहुल का क्या हुआ जब उसने एसईओ और कोल्ड आउटरीच सीखा? तो उसने एक्सपोनेंशियल सर्च तो दिखा कितना, ही स्टार्टेड अर्निंग $1,500 पर मंथ। उसकी ये स्टैग्नेंट हो गई थी, मतलब $500 उसने 3 महीने में कमाए, फिर 1500 1500 1500 1500 1500 एक रेगुलर इनकम की तरह उसका बन गया। 8th मंथ में उसने 1500 तक कमाया, 8th मंथ में उसने $2,000 पर मंथ पे अपग्रेड कर लिया अपने आप को, जस्ट बिकॉज ही वॉज लर्निंग एवरी डे, implementing every day, and growing his income। 0 से 500 पे गया, 500 से 1500 गया, 1500 से $2,000 पर मंथ चला गया, पर मंथ, राइट? Now he says that all of this could be done because he was supported by skill arbitrage team, and he got all of these skills, and once he had those skills and he was aligned with the business problem ke solutions of the client, he could command higher pay। सेम क्लाइंट से उसने, जिनसे वो 500 ले रहा था, $700 लेना शुरू कर दिया। क्यों? बिकॉज he could align himself with their business problems and solve them for them, right? तो अब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, किसी को आप उसका प्रॉफिट 5 करोड़ हो रहा था, आपने उसको 6 करोड़ करा दिया, रेवेन्यू 5 करोड़ हो रहा था, 6 करोड़ करा दिया, वो बंदा आपको पैसे क्यों नहीं देगा? आपने उसका 1 करोड़ बढ़ाया है भाई, बहुत आराम से देगा। बट यू हैव टू बी वेरी 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 attentive, you have to upskill yourself every time, and you have to pitch yourself। So now let's come to the final success mantra that we follow at skill arbitrage, जो हम कल at length bootcamp में तो डिस्कस करेंगे next 3 days में, बट मैं आपको आज एक प्राइमर दे देता हूँ कि हम ये सारा कुछ, हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स और ये सारा कुछ कैसे अचीव कर पा रहे हैं और ये कहाँ से डिराइव किया है। सो हमारा एक सक्सेस मंत्र है which says that you have to upskill, all right, that's the number 1। आपको आपकी जो एग्जिस्टिंग स्किल है उसके ऊपर एक प्रीमियम सीखना पड़ेगा, बेसिक स्किल से प्रीमियम पे जाना पड़ेगा, यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ। देन नेक्स्ट थिंग इज आउटरीच, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने वो स्किल सीख ली है, वो स्किल आती है, वो स्किल आपको you have to tell it to the world that I am equipped with this skill, I can do this, I can drive you this result। And in this process of outreach you will build a track record। So you have to upskill yourself, outreach and track record। ट्रैक रिकॉर्ड में क्या होगा, जो भी आप काम करते जाओगे या जो भी आप लर्न करते जाओगे, यू विल डॉक्यूमेंट इट। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लिंक्डइन प्रोफाइल्स होते हैं, उसमें ऐसे कंटेंट राइटर में मैंने प्रिंट में लिया है, मिंट में मेरा आर्टिकल्स हैं, मीडियम में मेरे आर्टिकल्स हैं, वो सब वो आर्टिकल्स वो मेंशन करते हैं। क्यों करते हैं? दे हैव टू शोकेस देयर ट्रैक रिकॉर्ड। तो सिर्फ लिंक्डइन एक वे नहीं है अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाने का। आप अपवर्क पे, फाइवर पे, पीपल पर आर पे, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे, भाई इस समय में तो इंस्टाग्राम से क्रेजी चीज नहीं है, और कंटेंट राइटर्स इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को भी चाहिए, बिकॉज हर रोज उनके पास तो नए आइडिया नहीं आ रहे, वो लोग भी कंटेंट राइटर ही रख रहे हैं, करेक्ट? तो आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाओगे इंस्टाग्राम पे कि भाई मैं कंटेंट राइटर हूँ, मेरे को इस तरीके का कंटेंट लिखना आता है, मैं अगर मेरा लिखा हुआ लैंडिंग पेज अगर आप यूज़ करोगे तो आप 5x मोर अर्न कर सकते हो या आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो यू आर सॉल्विंग द बिजनेस प्रॉब्लम, उनके पेन पॉइंट पे ट्रिगर कर रहे हो। कंटेंट राइटर का काम ही यही है भाई, अपना पेन पॉइंट को ट्रिगर करना है, उसको आपके कंटेंट के साथ इंटरेक्ट कराना है, एक स्टोरी टेलिंग मोड में उसको स्टोरी बताना है, मक्खन की तरह ही विल कम टू यू एंड से भाई काम कर दे मेरे, करेक्ट? सो आपको ट्रैक रिकॉर्ड बना रहे हैं, अपनी बेसिक स्किल को प्रीमियम बना के अपस्किल करना है अपने आप को। उसके बाद ट्रैक रिकॉर्ड बनाते जाओगे, जो जो सीख रहे हो, जो जो काम करोगे। इनिशियली हो सकता है आपको कुछ एक लोगों के लिए फ्री काम करना पड़े या लो पे काम करना पड़े, जस्ट टू बिल्ड योर ट्रैक रिकॉर्ड कि भाई लेट्स से किसी एक ब्रांड के लिए आपने काम किया, उसको बोला कि यार अच्छा आप ट्राई कर लो, मैं आपके लिए करके देता हूँ, इफ इट विल वर्क आउट इट विल वर्क आउट, इफ इट डजंट देन नो हार्म, आप मेरे को मत करना पे। बट वंस यू विल डिलीवर द रिजल्ट ना, अगर आपके पास वो प्रीमियम स्किल है
जो हम आपको अभी इस 3 दिन के बूट कैम्प में सिखाएंगे, भाई लोग आपको पैसा देंगे. एंड देन फाइनली यू विल स्टार्ट आउटरीचिंग टू द यूएस क्लाइंट्स. एक बार आपने प्रीमियम स्किल्स ऑब्टेन कर ली, ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया, देन द फाइनल स्टेप इज आउटरीचिंग टू यूएस क्लाइंट्स. अब आउटरीच में आप कैसे उन लोगों को पिच करोगे, अपनी क्या सर्विस पिच करोगे, कैसा मैसेज होना चाहिए, उन लोगों को ढूंढोगे कहाँ, ये सब चीज़ें एक कोल्ड आउटरीच का 3 पार्ट हमारा स्किल ट्रेनिंग का बंडल है, वो वील शेयर इन द ग्रुप. तो यू गो थ्रू दैट, तो आपको वो आउटरीच करना भी आ जाएगा. एंड इसको इन डिटेल हम बूट कैम्प में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो दिस इज द अल्टीमेट, और यू कैन से दिस इज द underline success formula, that you have to upskill yourself, you have to build a track record, and finally you have to outreach. If you are able to do this, भाई आपको कोई नहीं रोक सकता. आपको अपना कंसल्टिंग बिजनेस बनाना है, कंटेंट राइटर, एज अ कंटेंट राइटर अपनी कंपनी शुरू करनी है, या आपको अपनी ही कंपनी में ग्रो करना है, कोई आपको रोक ही नहीं सकता. अगर आप जाके अपनी कंपनी में बोलते हो, बॉस मैंने ये 4 स्किल ऑब्टेन करी हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है, मैंने इम्प्लीमेंट करके देखा था और उसके अंदर इफेक्ट्स 5x 10x 100x हो गए हैं, तो भाई वो बंदा आपको प्रमोशन, पैसे, सब कुछ देगा, even if you are in the job, and even if you want to have your own clients. So this is the success mantra. I have shared a lot of what exactly can you do as a content writer and how can you do that. अब इसकी स्किल्स हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स, आपके रजिस्टर्ड ईमेल, व्हाट्सएप पे शेयर कर चुके हैं, कुछ ऑलरेडी और बाकी कर देंगे. एंड कल बूट कैम्प में पूरा रोड मैप देंगे स्टेप बाय स्टेप कि भाई तुम अपना पहला क्लाइंट ले लो. बूट कैम्प अटेंड करोगे, तुम इमीडिएटली स्किल सीख सकते हो, और उनको अगर एफर्ट्स में तभी के तभी डालोगे, आप अपने फर्स्ट कुछ क्लाइंट्स लेके भी आ सकते हो. आप all you have to do is attend the bootcamp, get the roadmap, implement, and start earning and get a exponential growth. All right. प्रदीप कुमार कह रहे हैं भाई फ्रीलांसर कैसे बने. बॉस, आई हैव गिवन यू अ सक्सेस मंत्रा राइट नाउ. ये फ्रीलांसर बनने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप कंटेंट राइटर हो तो आप उसमें फ्रीलांसर बन सकते हो. आई हैव टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स जिन्होंने 100,000 200,000 90,000 डॉलर्स कमा लिए हैं अब तक एज अ कंटेंट राइटर. सिमिलरली आप बन सकते हो. रोड मैप हम पूरा बूट कैम्प के अंदर देंगे. वील शेयर द कंप्लीट रोड मैप इन द बूट कैम्प. यू शुड बी देयर, यू शुड अटेंड इट, एंड I think that step-by-step roadmap will answer your question of becoming a freelancer. We have already created almost every month. 1,400 of our students are getting freelance opportunity every month. मतलब किसी कॉलेज में भी अगर आप जाओगे, उनकी भी प्लेसमेंट्स इतनी नहीं होती जितनी हम एक महीने में पूरी जनरेट कर देते हैं, राइट. इतने फ्रीलांसर्स हम बना रहे हैं अब तक. ऑलमोस्ट स्किल आर्बिट्राज, लॉ सीखो कंबाइंड हमारे, आई डोंट इवन हैव अ काउंट नाउ, क्योंकि हर महीने 1400 अपॉर्चुनिटीज़ पे टैप कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर्स हमारे बच्चे, राइट. थैंक यू जया, वेल सेड, थैंक यू. यू हैव एनी क्वेश्चंस? थैंक यू पॉपकॉर्न म्यूजिक. All right, Mayank has a question. Will you teach me how to get a job in content writing domain in the bootcamp tomorrow? Definitely, yes. अभी मैंने आपको बताया आप क्या क्या जॉब्स कर सकते हो, बट कैसे कर सकते हो, क्या स्किल चाहिए, और कैसे उस जॉब को आपको लेना है, ये सब कुछ आई विल टीच यू. मतलब नॉट आई विल टीच यू, अभ्युदय एंड रामानुज, who are CEO and co-founder of Skill Arbitrage, will teach you and show you a complete roadmap step by step कि भाई तेरे को पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा, या तेरे को पहली जॉब कैसे मिलेगी, पहली गिग कैसे मिलेगी. They will give you a complete roadmap. So don't miss out. Mark your calendars. I'll see you tomorrow. ठीक है. Any more questions? All right, Kunal, if you are a content writer, आपने कंटेंट राइटिंग पहले करी है, या यू आर इंटरेस्टेड इन कंटेंट राइटिंग, यू नो इंग्लिश, यू हैव लैपटॉप, यू हैव इंटरनेट कनेक्शन, एंड यू हैव द डिटर्मिनेशन टू पुट इन सम हार्ड वर्क. कुछ हार्ड वर्क करने की डिटर्मिनेशन है आप में, कंटेंट राइटिंग कभी करी है,
अगर नहीं भी करी है, you are willing to learn how to do content writing, you guys can do this. We will teach you content writing कैसे की जाती है. बेसिक नेसेसिटीज आपको इंग्लिश आनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए. दैट इज ऑल. All right. Carol is saying, I'm a teacher. I need a part time job. All right. So, you are a teacher, you need a part time job. Most of our students are developing their freelance practice like this, that even if they are in job, they start working with us, they upskill themselves following our roadmap, and then slowly they start doing 1 or 2 projects per day, maybe spend 2 hours per day on their side gig. And once they have built a solid track record, and थोड़ा स्टेबल इनकम आनी शुरू हो जाती है, देन दे लीव आउट देयर जॉब एंड जंप इनटू फुल टाइम एज अ कंटेंट राइटर, राइट? एंड इवन इफ यू वांट टू कंटिन्यू एज अ पार्ट टाइमर, यू कैन. 2 घंटे per day is sufficient amount of time to spend on this, initially to upskill and then to work on certain assignments, and it can give you a good amount of money, as good as your job. And that is why after some time you feel like कि भाई अब जॉब छोड़ देते हैं, फुल टाइम फ्रीलांसर बन जाते हैं. और भाई फायदे बहुत है ना. इवन इफ यू लुक एट मी, आई एम अ रिमोट वर्कर, राइट? आई एम अ डिजिटल नोमैड. अभी आई कैन गिव यू अ, I don't have to go to my office in Gurgaon and sit there and give you this talk. I am at my home, sitting comfortably in my shorts. हाँ, ऊपर शर्ट पहनी हुई है लेकिन सिटिंग कंफर्टेबली इन माई शॉर्ट्स एंड गिविंग यू दिस टॉक, राइट? तो फायदे हैं ना भाई. अब स्कूल में अगर टीचर बन के जाओगे, पूरी साड़ी भी पहननी पड़ेगी, सूट पहनना पड़ेगा. नेसेसिटी नहीं है ना. इफ यू कैन बिल्ड योर प्रैक्टिस एज अ फ्रीलांसर एंड दैट टू एज अ कंटेंट राइटर, तो यू कैन अर्न मच मोर, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, एंड यू कैन, एंड यू आर योर ओन बॉस, राइट? आपको अपना आज 4 घंटे काम करना है तो 4 ही घंटे करेंगे, बिकॉज यू नो आपकी बिलिंग हो जाएगी. योर टारगेट इज कि हाँ, मेरे को इस महीने $2,000 बिल करने हैं. नाउ उसको मैं हो सकता है प्रोबेबली 2 हफ्ते में ही मैं उसको 2,000 बिल कर लूँ. मतलब आपके, दैट डिपेंड्स ऑन यू ना, हाउ मच हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन and how much efforts you are putting in. So once you can do that, आप अच्छे से grow करोगे. And even if you still want to continue as a part timer, आप सुबह अपना as a teacher job करिए, शाम को spend 2 or 3 hours, um, and then you can start your freelance journey or a part time journey. ऐसा है. Okay. Um, Telegram पे I have a question that what content should we write? Now, I think you joined a little late, but I discussed 6 broad categories of people or job roles that you can have as a content writer. And उसमें क्या क्या content लिखना होता है. There is community management, there is SEO and blog writer, there is a script writer, you can become a copywriter, you can become you probably write लैंडिंग पेजेस का कंटेंट हो सकता है. कंटेंट आप कुछ भी लिख रहे हो, वो मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है उस कंटेंट को आप इफेक्टिवनेस कैसे कैलकुलेट करा रहे हो. आपको ये कैलकुलेट कराना है, जिसको भी अपनी सर्विसेज पिच करनी है, कि भाई मेरे लिखे कंटेंट से तेरे को इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, या तेरी ये एक्स बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. लेट्स से अब हाँ, इससे मेरे को याद आया. सो एक एचआर में रोल होता है वेयर यू हैव टू एम्प्लॉयर ब्रांडिंग करनी होती है, ऑलराइट, सो दैट आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज आए और आपके एम्प्लॉयज को लगे यार ये कंपनी तो मेरे को बहुत वैल्यू करती है, और अच्छा अच्छा टैलेंट आपसे अट्रैक्ट हो. अब ये सारा कुछ भी जो है ना, एक कंटेंट राइटर ही कर सकता है. इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर ब्रांडिंग. अब एम्प्लॉयर ब्रांडिंग करेगा कौन? करेगा तो कंटेंट राइटर ही, क्योंकि कंटेंट ही लिख के देना है ना. उसके अंदर हो सकता है, लेट्स से अगर स्किल आर्बिट्राज को बोलना है मयंक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो वी हैव टू अप्रिशिएट हिम, तो क्या करना चाहिए? सो दे विल गो टू अ कंटेंट राइटर and say, boss, I have a person in marketing named Mayank. He's doing very good in as a project manager. आप उसका एक इंटरव्यू लो
और उसकी एक स्टोरी को इनकैप्सुलेट करके लिंक्डइन पे डालो, सो दैट देर इज लॉट ऑफ एंगेजमेंट इन इट एंड इट गोज वायरल। तो जो जो लोग वो स्टोरी पढ़ेंगे, जो वो फीडबैक मयंक देगा कि आई एम वेरी कंफर्टेबल वर्किंग एज वर्किंग इन अ रिमोट एनवायरनमेंट एंड बहुत अच्छा कल्चर है, ये है वो है, तो कंपनी के लिए लोग अट्रैक्ट होंगे। तो एक एम्प्लॉयर ब्रांडिंग हो गई ना। अच्छा टैलेंट कहेगा यार मेरे को हाँ इस कंपनी में काम करना है, और जो आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो बोलेगा यार ये तो मेरे को बहुत वैल्यू करते हैं, तो वो कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा। इस टाइप का कंटेंट भी लिख सकते हो। नाउ आई एम श्योर आपने अपने करियर में ये सब कंटेंट लिख के किसी ना किसी को दिया है, बट यू हैव नॉट रियलाइज द वैल्यू योर कंटेंट इज डिराइविंग। अगर आप एक अच्छा एम्प्लॉय अट्रैक्ट कर पाते हो अपने कंटेंट से, या आप अपनी एक स्टोरी को वायरल ले जाते हो, एक सोशल मीडिया पोस्ट आपने डाला और वो वायरल हो गया, विद इन 2 days उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस आ गए, तो भाई आपकी ब्रांड की इमेज कितनी अच्छी बन गई ना। इफ यू कैन पिच योर सेल्फ एज दैट, भाई एनीबडी एंड एवरीबडी विल पे यू। एंड इनफैक्ट इसी के लिए हमने एक स्किल डिजाइन करी है, हाउ टू राइट अ स्टोरी दैट कैन गो वायरल। ये भी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल्स, योर इंस्टाग्राम, सॉरी योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर्स पे हम शेयर कर चुके हैं। सो आई होप Nagina, I have answered your question. Sorry if I pronounce your name wrong. All right. Kunal, if you are not good at English, that is also okay. ठीक है आपको इंग्लिश नहीं आती, बट बेसिकली आपको इंग्लिश समझ में आना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ आपको जब समझ में आ जाए, बिकॉज वी हैव अ इंग्लिश कोर्स ऑल्सो, all right, where we can help you. But again, basic English you need to know. We will not teach you from scratch because it's a content writing job and you have to work with US clients. So you need to know basic English. आपको बहुत अच्छे से नहीं आती, हाई फाई नहीं आती, वो हम सिखा देंगे, डोंट वरी। Nagina, you are new in this field. You don't know how to grow your skills, how to, probably pitch yourself, and what skills should you train yourself for. ये सब आपको questions होंगे. We will answer all of these questions in our bootcamp tomorrow. So I'll just discuss the agenda of the bootcamp. I'll just take few more questions and then I'll discuss the agenda of the bootcamp for tomorrow. Just give me a second. All right, so I'll just move to the next question. All right, so I have a person. Carol, okay. So Jaya is asking, what is the maximum earning by your student? So if you talk about a person in content writing, we have students who are charging $25 per hour right now, and their Upwork earning is around uh, $50,000, and we have people who are working on other platforms and working directly with startups and have more than $2,000 of $2,000 per month of contracts. We have one of my student, she had an experience of 17 or probably 18 years of experience as a content writer. She was earning around uh, 80,000 or something, 80,000 rupees per month, and right now she has a contract of $10,000 in her hand from a Singapore firm. So uh, that's the quantum of earnings that our students have achieved. In detail, we'll post it on our Telegram channels. We have shared it on your email as well, so that you can go through what our students have achieved, right? Um, so yeah, that's about your question. I think Jay, I have answered your question. Uh, Kunal, I'll get back to you what I will teach you tomorrow on the session. I'll end the session with the agenda of the bootcamp. Uh,
Jyoti is saying, I have 7 years of experience in content writing. How will it help me out of 7 years? 4 years is in finance industry, like NBFC, bank, insurance companies, etc. Amazing. So, Jyoti, now you have a very, uh, a different positioning, just like me. So now you see me as a deputy director marketing of Skill Arbitrage and Law Seco. But if you see, by education, I'm a lawyer. All right. When I joined Law Seco, back then the Skill Arbitrage was not existing. There was Law Seco. Law Seco and Skill Arbitrage are both sister concerns. They are both owned by the same company called Addictive Learning Technologies. So when I was hired in Law Seco, what was my positioning? I was running a production house, so I knew video production. I knew a little about marketing, a very little about marketing, and I was completing my degree in law. Now I was very strategically placed in Law Seco. How? I have a law degree. I know how to make video ads, and I can help you. All right. Their problem at that point of time was we are not able to produce good quality video uh, at that point of time. They were that time the team was only 40 people, right? So I had a very unique proposition कि मेरे को लॉ भी पता है और मेरे को वीडियो एडिटिंग वीडियो प्रोड्यूसिंग भी आती है, तो आई विल हेल्प यू आउट. सिमिलरली ज्योति, आप एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज को ये बोल सकते हो कि भाई मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है एनबीएफसी की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, बैंक्स की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इंश्योरेंस की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, किस तरीके का कंटेंट चाहिए होता है, किस तरीके का कंटेंट अगर मैं आपको दूंगा या दूंगी वुड हेल्प यू आउट इन इंक्रीजिंग द एंगेजमेंट ऑफ योर कस्टमर. बैंक्स सबसे ज्यादा ईमेल मार्केटिंग करते हैं, कोल्ड ईमेल भर भर के बेचते हैं. उनको अपना क्रेडिट कार्ड बेचना है, उनको अपना प्रीमियम प्लान बेचना है, उनको प्रायोरिटी प्लान्स बेचने हैं, उनको अगेन कुछ लोगों को ऑन बोर्ड भी करना है. सो दे हैव डेटा बेसिस, उस पर उनको मैसेजेस करके और मेल्स करके दे हैव टू गेट ऑन बोर्डेड दीज पीपल. So they need cold email outreach funnels, right? They need social media strategy also, and you will see a lot of banks don't have a very strong social media strategy. And right now SBI भी आ गया है and वो भी अपनी creative ads लिखवा रहा है so that they can stand out. अभी आपने SBI वाली ads देखी होंगी ना, which says आपको पता है इनका बैंक कौन है, SBI SBI. So ये भी तो किसी content writer ने लिखा होगा. And Jyoti, if you have a background of finance industry, NBFC, banks, leverage that. Create a very unique proposition कि भाई मेरे को आपकी मार्केट समझ में आती है, I can provide you better content. Now only catch is you have to upskill yourself in writing value added content, right? वो हम आपको बूट कैम्प में कल सिखा सकते हैं. और उसके बाद उस चीज को आपको पिच कैसे करना है टू द क्लाइंट्स, वो भी हम कल सिखा देंगे. बिकॉज इन 3 दिन के बूट कैम्प में हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है ना, पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड वांट टू वर्क एज अ कंटेंट राइटर और आर वर्किंग एज अ कंटेंट राइटर, they should be able to earn 5x more, correct? They should be able to start their own freelance practice or probably grow in their own what do we say, grow in their own jobs, right? So the whole idea of this bootcamp is this. तो ये सब कुछ हम कल कवर करेंगे एंड आई थिंक आई हैव elaborately answered how you are very strategically placed in this market and you can be the queen of this market once you enter it. You just need a clear roadmap जो कि हम कल बूट कैम्प में आपको अच्छे से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप. ऑल राइट. 4U367 says, I don't have a laptop. Can I start as a content writer? Yes, you can. In fact, a lot of people start video editing also on their phones. If you have a phone that has internet and can download a few apps, you can work on docs or probably send out emails. Then you can definitely start as a content writer. Laptop is not a necessity. It is, yes, a supporting tool.
if you have it, it will help you more because typing on the keyboard is easier. But you can do it on your tab or your on your phones as well, right? Now, okay, Jyoti, you are continuing on digital marketing course also. That is amazing. But again, digital marketing courses are generally very, very, scattered. Uh, I also, as a lawyer, like I explained, that I am a lawyer and I do not know marketing much. So I also, to learn about digital marketing, went through a course, did a course. What I've realized is that most of the courses आर वेरी स्कैटर्ड, आपको कुछ भी टारगेटेड नहीं सिखाते हैं कि फ्रॉम विच यू कैन एक्चुअली स्टार्ट अर्निंग, राइट? आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देंगे, इट्स लाइक अ सीबीएसई बुक जो आपको बेसिक ओवरव्यू देता है एंड इन डेप्थ इतना नहीं जाते हैं, करेक्ट? उसके लिए आपको आर डी शर्मा या एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स पे जाना पड़ता है, करेक्ट? तो दैट्स द थिंग. तभी हम वी आर वेरी फोकस्ड ऑन कंटेंट राइटिंग बिकॉज वी नो राइट नाउ मार्केटिंग की बैकबोन है कंटेंट राइटिंग, एंड यू मस्ट हैव हर्ड कंटेंट इज द किंग एज द वर्ड, राइट? तो we know that is why we have made a very focused ecosystem on content writing कि content writing में आपको कैसे successful होना है. But yes, your course on digital marketing will help you build a wholesome understanding of how the market is functioning, what is the requirement, what is the technicalities, and it will help you pitch yourself better, right? Now abhi we talked a lot about your finance background, right? Now if you have a understanding of digital marketing also and you then learn content writing from a boot camp, hi, you are sorted. You just have to go to pitch, go and pitch yourself as to the clients, and you will start earning immediately. So cheers, Jyoti. I'll see you in the bootcamp tomorrow. Hi, Bridge. Hi, Bijit. You can start your career as a content writer. I have given you the success mantra. And if you want an elaborate roadmap, a step-by-step roadmap, you should join our bootcamp tomorrow, and you can start there. Kunal says, मुझे basic English आती है, बहुत बढ़िया. Join the bootcamp tomorrow, and इंग्लिश के लिए भी जो आपको बस फॉलो करना है स्लोली स्लोली, जैसे मैं जितना इंग्लिश में मैं बात कर रहा हूँ उतनी ही वो बात करेंगे. दे विल टीच यू थिंग्स देयर. तो गुड टू गो. आई सी यू देयर, कुणाल. What are the subjects for content writers such as philosophy, history, and art subjects? Virendra, it depends on you how much you are reading on these subjects. But what we are aiming to teach you is that how do you monetize your content writing skills. ये सब बुक्स आपने कॉलेजेस में अपने स्कूल्स में पढ़ ली. लॉट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस विल आल्सो टीच यू दिस, बट nobody will teach you how exactly you have to pitch your content writing skills and start earning. मैं फिलॉसफी का एक ब्लॉग लिख के कितना कमा लूँगा, लेकिन अगर कोई कंपनी है जो फिलॉसफी का कोर्स बेचती है, करेक्ट, आप उसके पास जाओ और बोलो बॉस आई विल राइट कंटेंट फॉर यू, जिससे कि लोग अट्रैक्ट होके आएंगे और उसके बाद दे विल एंटर योर सेल्स फनल और वो फिलॉसफी का कोर्स आपसे खरीद लेंगे. या लेट्स से आपने और क्या सब्जेक्ट लिखा है, हिस्ट्री लिखा है, ठीक है. अब हिस्ट्री आपने पढ़ी, या लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फिल्म्स. आपने फिल्म फीचर फिल्म्स भी लिखा है, आपने फीचर फिल्म्स बहुत सारी देखी हैं. यू हैव डन योर रिसर्च, राइट? यू आर स्ट्रॉन्ग ऑन दैट, यू कैन राइट कंटेंट ऑन दैट. अब कोई प्रोडक्शन हाउस का बंदा आता है, बोलता है यार आई एम अ न्यू प्रोडक्शन हाउस, आई हैव टू अट्रैक्ट मोर ऑफ द प्रोड्यूसर्स, राइट? आई हैव टू अट्रैक्ट गुड टैलेंट फॉर माई डायरेक्शन टीम. मुझे लोग हायर करने हैं, तो मैं कैसे करूँ? एंड ऑल्सो आई हैव टू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ पीपल जो मेरी प्रोडक्शन देखेंगे. तो आप अगर अपनी फीचर फिल्म के अंडरस्टैंडिंग से ऐसा कंटेंट डिलीवर कर पाते हो जिससे कि वो कम्युनिटी बिल्ड होती है, राइट? तभी वो फर्स्ट वाला जो रोल था कम्युनिटी मैनेजर वाला, आप उसमें आ सकते हो, राइट? आप फीचर फिल्म्स के बारे में लिखोगे लिखोगे लिखोगे, बहुत सारे लोग जिनको फीचर फिल्म्स पसंद है उनकी एक कम्युनिटी बन जाएगी, करेक्ट? एंड उसमें से फिर लोग होंगे जो इस कंपनी के लिए काम करने लगेंगे.
जो इस कंपनी का कंटेंट कंज्यूम करेंगे, जो ये प्रोडक्शन कंपनी है, राइट? तो आपने उनकी पूरी कम्युनिटी बना दी। तो अब नेक्स्ट टाइम जब लेट से आपने 1000 लोगों की कम्युनिटी बनाई, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते हैं, एक महीने में 1000 लोगों की कम्युनिटी बना दी आपने, करेक्ट? अब उसकी वीडियो आएगी प्रोडक्शन कंपनी वाले की, एक बारी में 1000 लोग देख लेंगे, बिकॉज वो उससे इतना अट्रैक्ट अटैच्ड है, वो ऑलरेडी दे आर कंज्यूमिंग योर कंटेंट, राइट? That's the USP that you have to create. That's what we are teaching you. We are teaching you how you have to sell your content writing skills, right? These all of these things make the base true on that, but more important is that how do you monetize your skill? That's the core thing that you have to do. Popcorn Music says that I have documented 5,000 pages of creative history of Jaipur. Amazing Popcorn Music. I would love to know your original name, but I love this Popcorn Music also. Very fancy. And a lot of features, feature films, etc. Amazing. I'm sure I will be benefiting by this bootcamp. Definitely, yes. This is designed for people like you. And how can you pitch yourself? That I think that skill will be the best for you tomorrow. Yeah. Uh, all right. Jyoti says, but why will they consider a person then they prefer an agency? देखो एजेंसी एक तो बहुत महंगी होती है. ऑल द एजेंसीज वर्क ऑन लॉन्ग टर्म रिटेनरशिप्स. वो आपको कहेंगे 6 महीने का पैकेज ले लो, साल का पैकेज ले लो, उसके अंदर हम कोल्ड ईमेलिंग भी करेंगे, सोशल मीडिया भी करेंगे. बट व्हेन यू आर गोइंग एज अ पर्सन एंड एज अ पर्सन ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर फील्ड, एजेंसी के पास ऐसा बंदा नहीं होगा जो आके ये बोले भाई मैं इंश्योरेंस बैकग्राउंड से हूँ, बैंकिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरे को आता है, मेरे को तुम्हारी मार्केट पता है, मैं उसके लिए टेलर्ड कंटेंट लिख सकता हूँ. वो नहीं मिलेंगे. उनको सब डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग मिलेंगे एजेंसी में, करेक्ट? इवन इफ किसी एक एजेंसी के अंदर ऐसा बंदा मिल भी जाए, वेरी लेस चांस दैट वो बंदा डायरेक्टली उस क्लाइंट के साथ डील कर रहा होगा, बिकॉज एजेंसी में मल्टीपल क्लाइंट्स पे काम करते हैं एंड दे आर लॉट मोर एक्सपेंसिव. तो इसीलिए यू हैव टू टारगेट स्टार्टअप्स. अभी आईडीएफसी बैंक कहेगा मुझे एजेंसी हायर नहीं करनी है फुल टाइम क्योंकि बहुत पैसा ले लेगी, राइट? बट एज अ इंडिविजुअल इफ यू गो और बोलते हो बॉस आई वेंट थ्रू योर कस्टमर जर्नी, आई फिगर्ड आउट कि अगर मैंने आपके साथ एक ट्रांजैक्शन करी और वहाँ से मैं ड्रॉप हो गया, यू डिड नॉट recall me and I can help you set up a email funnel to recall that customer जो वहाँ पे ड्रॉप हो गया है. And because I am from a financial background, NBSC background, I understand your product, I understand digital marketing, I understand content writing, I can write content and email funnel for you. IDFC मना ही नहीं करेगा आपको, एंड आप उनको एजेंसी से एनी टाइम सस्ते पड़ोगे और एजेंसी से बेटर डेडलाइन, बेटर टेलर्ड कंटेंट दोगे. दैट इज द होल पिच ना. यू हैव टू बिकम द एक्स फैक्टर. आपको एक्स फैक्टर ही तो डेवलप करना है ना. दैट्स द कैच, राइट? All right, how to attract US clients with our writing in subjects which they want. So आपको अपने US clients को identify करना पड़ेगा and बहुत सारे projects are available online. Upwork पे देख लो, Fiverr पे देख लो. Lot of people will tell you that वहाँ पे competition बहुत है. But if you have a very strong, profile and a track record, you will beat everybody. You will even beat agencies, correct? That is why I said you have to upskill yourself, build a track record and then outreach to these clients. And outreach कैसे करना है? One way of outreaching is cold emails, and वो वाला skill 3 parts हमारी faculties ने समझाया and हम इस community में share कर देंगे. Even if you search on skill arbitrage का YouTube channel, you will find the 3 videos: how to send out a cold outreach email to startups pitching your services, how to automate your cold emailing things, right? And all of this is about setting up a automated system. आपको हर रोज बैठ के मेल नहीं करना है किसी को, जैसे हम CVs भेजते हैं.
It is an automated system because AI आ गया है. We have incorporated those AI tools as well. All right. So that way you can target US clients. And इसको एक specifically US clients को कैसे target करना है हम कल boot camp में करके दिखाएंगे. Abhyuday will come and he will show you how actually you can target a US client. सबसे पहले तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा कि वो US client मिलेगा क्या. Where will you find this US client, right? You will have to find out that person. You will find, how will you find out that? We'll tell you in the boot camp. What kind of messaging you have to send, we will discuss that also. And a sample message is already shared with you on your emails also. So go through all the emails that we have sent, go through all the WhatsApp messages that we have sent. We'll be sharing, like I said, we'll create a link stack of blog post. ये सब skills को हम एक blog post के link stack में डालते हैं. We'll share it in our Telegram and WhatsApp community. Go through them. There also you will find a lot of information on how you have to reach out to US clients. And कल तो live we'll show you how it is done. रीडिंग एंड राइटिंग सब कुछ ठीक है, बट अगर आपको कोई सामने लाइव डेमो दे देगा, ऑल ऑफ इट वुड बी क्लियर टू यू. करेक्ट. सो go there and attend the boot camp, get the demo of how you have to do this and get US clients, right? Cheers, Virendra, on that. Jyoti says thanks, so I think I have answered all her questions, but lovely questions, and I hope to see you tomorrow in the boot camp. I worked in a banking tech company. I struggled with the short light content as I'm used to writing long analytical reports in words. So, Ranjani, that's the thing. Abhi, every हमारा attention span, you all know that attention span, reels or the fast commerce. अभी तो हमारे को सब कुछ खरीदना भी Instagram पे ही है in a second, right? That's the new game. So you have to little upskill yourself, but I would not say कि long form content is not valuable anymore. It is. If you will look at the kind of email campaigns that Skill Arbitrage has, you will see a lot of long form content because we have to deliver you value so that we can create more number of freelancers. So we have long form of content in our emails that is also very valuable. It's again your find that how do you have to find out those clients that match your profile. Yes, you will have to upskill yourself a little so that you can come to the level of the market right now, because market is demanding a very fast and a shorter crisper content. बट अगेन आपका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, एक कोई ऐसा प्लेयर होगा जिसको आपका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट चाहिए होगा. यू हैव टू फिगर दैट आउट. फॉर दैट यू हैव नीड टू हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड. यू नीड टू आउटरीच टू दिस काइंड ऑफ पीपल. सो ये पूरा सक्सेस मंत्रा विल बी helpful for you as well. And I'm sure if you join tomorrow in the boot camp, you will realize that इस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के यूज केसेस क्या हैं, कैसी कंपनीज को ऐसा चाहिए होता है, and how can you reach out to them, and how can you set your pricing strategy. In fact, pricing strategy से I got reminded that there's a complete document that we have created on pricing strategy, that how you have to structurize and strategize your price point as a content writer, so that people are not paying you $30 30 paisa per word, rather you are getting a $3,000 contract, right? So वो pricing strategy के ऊपर भी हमने पूरा एक document we have shared with you. Go through that as well. I'm getting reminded of all the content that we have already shared. I'm just thinking, overload mat ho jana. One by one, go through them, study them, and you can obviously save them up and read it later as well. And a lot of those things we'll discuss live in the bootcamp as well, and give you demos on that, right? Beena Menon, when did this start? I wasn't informed. I thought the session is tomorrow at 12 p.m. Yes, the bootcamp is at 12 p.m. tomorrow. The content writing bootcamp, the bootcamp starts at 12 p.m. tomorrow. That is 25th of May, 12 to 3 p.m.
This is just a live for objection clearing, and why should you attend the bootcamp tomorrow? What should you expect out of the bootcamp? And a reminder that all of the content that we have shared can build a strong base for you, and you can experience higher amount of higher amount of engagement and higher amount of uh, value from the bootcamp tomorrow if you go through all of this content. So don't worry, you have not missed out on anything. The bootcamp starts on 25th May, 12 p.m. That is tomorrow. All right. So finally, we know Popcorn Music ka naam. Ashok Atreya is from Popcorn Music, and so I have few questions on what specific niches or types of content are most in demand among the US clients. This is the agenda. This is on agenda tomorrow in the bootcamp. We'll discuss this. It is a very descriptive answer, so I wouldn't be able to take it up here. But because we are booked for 3 hours for your queries and answers questions, we'll be answering this in the boot camp tomorrow, right? And how can Indian content writers effectively research and understand the needs and preferences of US audience? Now, it depends on what kind of audience are you targeting. Now, for an example, if I talk about somebody who wants to start working with an early stage startup in US, right? Now, how do you research those people out? वो लोग मिलेंगे कहाँ पे? Now you must have heard of Y Combinator and Techstars. So these two platforms are, or you can say startups also. These two platforms are startup mentors and like a incubator. So a lot of the startups जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं are listed here, and they have a batch every year. There are batches in this प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको स्टार्टअप्स मिल जाएंगे हु आर इन देयर अर्ली स्टेज. आप उनको उस अर्ली स्टेज में इफ़ यू वांट टू हेल्प देम आउट, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल दिया होता है कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड, व्हाट इज़ देयर प्रोडक्ट, व्हाट इज़ देयर पिचिंग, what kind of messaging they want to gather, because it's an incubator ना, तो वो वहाँ पे वो ecosystem ऐसा है. So there uh, you can sometimes find the business problems there itself, उसके description में ही मिल जाते हैं. So this we will teach you in the bootcamp tomorrow कि Y Combinator पे कैसे लाइव डेमो में समझाएंगे. I'm talking about where you can find new age or the starting businesses or the starting startups, वो कहाँ मिलेंगे. वो Y Combinator या टेक्सटार की वेबसाइट पे आपको मिल सकते हैं. रिसेंट वाले बैचेस में जाके अगर आप देखेंगे, कल लाइव डेमो में स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे हाउ डू यू फाइंड दैट, एंड उसके बाद हाउ डू यू पिच दैम. लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो. यू कैन रीच देम आउट ऑन देयर ईमेल्स. ईमेल में क्या लिखना चाहिए, लिंक्डइन मैसेज में क्या लिखना चाहिए. सो दैट. एंड इन फैक्ट व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द 3 पार्ट कोल्ड ईमेल प्रोसेस ना, उसमें जो हमारा सेकंड पार्ट है, इन दैट सेकंड पार्ट वी हैव डिस्कस्ड कि आप अपना मेल पर्सनलाइज कैसे कर सकते हो. सो यूजिंग चैट जीपीटी, आर डायरेक्टर ऑफ कंटेंट हैज एक्सप्लेन्ड कि आप एक कंपनी के पेज को चैट जीपीटी में डालो, इट विल एनालाइज एंड गिव यू कि भाई उसकी प्रॉब्लम, उसकी बिजनेस नीड क्या है, और वो प्रॉब्लम एंड बिजनेस नीड को वो उस ईमेल में इनकॉर्पोरेट करेगा और पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजेगा. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दीज 3 वीडियोज एटलीस्ट, जो 3 पार्ट कोल्ड ईमेल का हमारा प्रोसेस है. आई विल एड दिस इन द लिंक स्टैक ऑल्सो. सो इसके अंदर यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आप यूएस के स्टार्टअप्स को कैसे उनकी बिजनेस प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो यूजिंग द एआई. आपको इसमें अब ज़्यादा एफर्ट भी नहीं मारना, चैट जीपीटी आपको वो भी हेल्प कर देगा, राइट? Ranjani says that was valuable. Thank you, Ranjani. Can I also get help in story writing for a movie? Kunal, yes, you can, because most of the content in marketing also is storytelling. So the basic principles
remain the same. And ultimately you have to sell your story as well. So you have to make it sellable also. How do you have to pitch it, and what kind of clients you have to outreach, वो आपका सेगमेंट अलग हो जाएगा. बट what will remain same is that सक्सेस मंत्र आपका वही रहने वाला है. You have to upskill to write a story for a movie and make it sellable. Build a track record कि हाँ, when you will go and pitch to someone कि भाई ये मैंने स्टोरी लिखी है, उसके पास वो एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, सो दैट ही कैन ट्रस्ट यू. एंड देन फाइनली आप उन लोगों तक पहुंचोगे कैसे, उनको क्या मैसेजिंग दोगे, राइट? आपका टारगेट ऑडियंस बदलेगी, बट द बेसिक things will remain the same. Basic concepts of writing will also remain same, because आज की डेट में you will see that अगर आपको एक कैप्शन लिखना है या रैंडम कंटेंट लिखना है, वो चैट जीपीटी, एआई एंड हंड्रेड्स ऑफ एआई टूल्स कर सकते हैं. But the only thing that will make you stand out as a content writer is the way you do a storytelling, right? अगर आज आपने मेरा वे भी देखा हो, I have explained the opportunity in content writing through a story only. The story of Rahul that we discussed. हमने जो 6 parts of 6 roles that we discussed as a content writer were derived from the story of Rahul itself, right? So the basic principles will remain the same. So you can definitely learn how to write a story for a movie. Beena says, thank you. If you could help me where the bootcamp will be held, which platform, and where and when the link. All right. So the bootcamp will be conducted over Zoom, all right, in a webinar mode. Like if you have attended any webinars in the time of the lockdown, Zoom के ऊपर आपका होगा. You can download a Zoom app in your phone, or else you can download it on your laptop as well. Log in from your Gmail account into your Zoom, or you can create a Zoom account as well. It is completely safe. Don't not to worry. Very trusted app. Uh, and as to your joining link, a specific joining link, a personalized joining link for each of the member who have registered for the bootcamp will be shared on their email and their WhatsApp. And if by chance you haven't received an email or a WhatsApp, it will be available in our Telegram WhatsApp communities as well. All right. So you can join it from that link. You just have to click on the link and you will enter the meeting if you have already registered. If you have not registered already, you will have to enter your name and a contact number, and then you will be able to enter the meeting. All right. So it will be held on Zoom. Uh, Better that you all of you attend it on a laptop and with your headphones on, because lot of value will be delivered. I don't want that you get distracted by any of the things. So get your headphones also and be in a good network area, because there will be a presentation shared. There will be speakers whose video and audio should be clear, so that you can understand the concepts, understand the skills, and you don't miss out on anything. You can take screenshots of the presentation, but no presentation will be provided post the bootcamp, or no recordings will be provided of the bootcamp. So you have to attend it live. Tomorrow, it starts tomorrow at 12 p.m. All right, it will happen on Zoom. Cool. Excited and look forward to tomorrow meet skill arbitrage. We are also excited to all of you to have all of you in the boot camp. In fact, you will be surprised to know that there have been more than, I can't tell you the exact number, but there have been more than 15,000 registrations, and this event is going to be one of its kind. I'm sure you haven't attended uh, an event of this size in a long, long time, where thousands of people are sitting from or for a same cause. Everybody will be sitting uh, to become a content writer, or has been working as a content writer. So the energy, I'm just so excited about the energy that there will be in the boot camp tomorrow.
And I look forward to have you all there. Cheers. Thanks, Ashok ji. He says really good and prospective dialogue. I think everybody like that. So Virendra, you will get your Zoom link before the bootcamp, and a reminder will also be sent at 12 p.m. So not to worry. You will have your links 2 hours before the bootcamp starts. Recorded sessions will not be provided of the bootcamp. No presentations will be shared of the bootcamp. Yes, you can take screenshots of the bootcamp presentations, but it will not be shared post the bootcamp. You have to attend it live. Amazing, Beena. You have a Zoom account and you are registered. Cheers. So I'll see you all tomorrow. I have extended my live to 1.5 hours. We just had to do it for a 30-minute talk. But yes, very fruitful dialogue. I hope you enjoyed today. And uh, the amount of skills and the information that you will gather tomorrow in the bootcamp is 100x of what I have shared, because I have just simply answered your question. There we have hardcore skills that we have planned. Oh yes, from that I got reminded that I have to share a agenda for tomorrow. Just give me a second. I'll open the document specifically so that I don't miss out on any of the skills that we are focusing on tomorrow, and or like all the 3 days, right? Just give me a second. Till then, you can put on any of the questions that you might have, and so I am just so excited that you guys are so excited right now listening to me. What will happen if you will listen to Abhyuday? Abhyuday and the whole team is sitting down from last 1 week and just preparing content for you guys, so that you can probably you get lots and lots of value from the bootcamp. So now talking about tomorrow's agenda, we'll start off by answering why there is a massive opportunity in content writing in the coming decade. What is the difference between a content writer who earns 1 rupee per word versus someone who earns $5,000 per month, right? Why should you target international clients? यूएस क्लाइंट्स पे क्यों टारगेट करना है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे क्यों टारगेट करना है, इंडियन क्लाइंट्स क्यों नहीं? वील आंसर दैट. व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट राइटिंग वर्क इज हाईली सॉट आफ्टर बाय देम? क्या कंटेंट उनको चाहिए, एंड हाउ यू कैन डू गिव दैट? Why do 90% of Indian freelancers fail to secure international opportunities? इसमें हम केस स्टडीज भी बताएंगे, बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो कुछ कुछ चीज़ें गलत करते हैं. स्टेप बाय स्टेप रोड मैप ले लेते हैं एंड दे स्किप आउट. फर्स्ट स्टेप करेंगे, फिर सीधा फिफ्थ स्टेप पे आ जाएंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप को स्किप कर दिया. दैट्स वाई. सो हम वो केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि uh, ये फ्रीलांसर्स फेल क्यों हो जाते हैं. बिकॉज बहुत सारी चैटर आपने सुनी होगी, अरे फ्रीलांसिंग में कुछ नहीं रखा, देयर इज नो सिक्योरिटी और ये सब. सो टू आंसर दैट वील गिव यू स्पेसिफिक केस स्टडीज कि भाई वो फेल क्यों हुए थे एंड व्हाई विल यू नॉट फेल. बिकॉज हमारे पास एक फेल प्रूफ फुल प्रूफ रोड मैप होगा जो हम आपको देंगे कल बूट कैंप में. हाउ टू रीच आउट टू सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स एंड पिच योर सर्विसेज एज अ कंटेंट राइटर. मैंने आई थ्रू आउट माई लाइव टॉक आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस कि भाई मैसेज करना भी सिखाएंगे, कैसे ढूंढना है वो भी सिखाएंगे, और क्या मैसेज करना है वो भी सिखाएंगे, राइट? इंटरनेशनल कंटेंट राइटिंग प्रोजेक्ट्स कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे? सिर्फ अपवर्क फाइवर पे मिलेंगे क्या, या और भी प्लेटफॉर्म्स हैं? वो सारों कुछ हम कल एक्सप्लोर करेंगे लाइव आपके साथ. इंटरनेट पे सर्च करेंगे बिल्कुल सामने आपके, ताकि आप भी साथ साथ सर्च करके सीख सको कि कैसे एक्चुअली ढूंढना है एंड फिर उसको पिच भी करना है, राइट? आई टॉक्ड अबाउट एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कंटेंट, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एज अ कॉन्सेप्ट, वो कैसे लिखते हैं, कल वो पूरा स्किल समझाएंगे. सो आई वाज सेइंग ना कि भाई आप एचआरएस की बहुत हेल्प कर सकते हो, तो कल वो स्किल सिखा दूंगा. सो आप वो कल स्किल सीख लोगे, कल को जाके आप अपना एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का कंटेंट राइटिंग का पिच मार सकते हो किसी स्टार्टअप या किसी अच्छी कंपनी को भी, ठीक है? We will discuss case studies of people who have been earning thousands of dollars per month with content. इस केस स्टडीज में कुछ एक्सटर्नल लोग भी होंगे, कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी होंगे. इनफैक्ट
हमारे कुछ स्टूडेंट्स कल आएंगे बूट कैम्प में और आपको एक्सप्लेन करेंगे हाउ देयर जर्नी हैज़ बीन एंड उन्होंने कितना कमा लिया है अब तक. How to approach rich venture capitalist or some other rich or famous person for getting content writing work. अभी आपने यू हैव सीन शार्क टैंक की वजह से बहुत सारा फंडिंग का एक बूम आ गया है, सो वेंचर कैपिटलिस्ट बढ़ रहे हैं एंड सब लोग इसके अंदर घुस रहे हैं, सबको अपनी पर्सनल ब्रांड क्रिएट करनी है, सबको फेमस होना है. तो उन लोगों को कैसे रीच आउट करना है ताकि आप उन लोगों के लिए काम कर सको, उनके लिए कंटेंट लिख सको, राइट. एंड देन फाइनली आप एआई को यूज़ करके कैसे इस पूरी जर्नी को ईज आउट कर सकते हो और एक सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बन सकते हो. ये सारे क्वेश्चंस सिर्फ कल के लिए है. दिस इज द एजेंडा फॉर डे 1 ऑफ द बूट कैंप. ठीक है, डे 2 और डे 3 में तो बहुत कुछ है भाई, वो डिस्कस करने लगूंगा तो आधा घंटा और चला जाएगा. तो एसईओ के बारे में तो मैंने आपको बताया है दैट यू नो इन दीज 3 days हम आपको मोटा मोटा जितने भी रोल्स आप एज अ कंटेंट राइटर प्ले कर सकते हो उसकी एटलीस्ट एक स्किल तो हम सिखाएंगे. एंड इसमें से कुछ स्किल्स हम ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप, ईमेल, टेलीग्राम ग्रुप में सिखाना शुरू कर चुके हैं. ठीक है, अब डे 1 पे बारी आती है. अगर कल आप डे 1 पे 2.5 घंटे के लिए बूट कैंप को अटेंड करोगे ना तो आपको कुछ गिव अवेज भी मिलेंगे. व्हाट आर दोज गिव अवेज? व्हाई एंड हाउ टू इंक्लूड ब्लॉग पोस्ट इन योर सीवी टू गेट कंटेंट राइटिंग असाइनमेंट्स. सीवी पे ब्लॉग पोस्ट जनरली नहीं लिखते हैं बट ये कंटेंट राइटर्स के लिए एक अपर हैंड मिल जाता है. उसको कैसे आपको इनकॉर्पोरेट करना है और उससे आपको उसको कैसे पिच करना है अपने सीवी पे भी, वो हम कल सीखे. मतलब उसका पूरा जो गाइड है, अगर आप कल 2.5 घंटे अटेंड करोगे बूट कैंप तो आपको गाइड मिलेगी. सेकेंड वन इज ब्लॉगिंग, यूट्यूब एंड सोशल मीडिया. वाई एज अ कंटेंट राइटर यू मस्ट मास्टर दीज. इसकी पूरी गाइड मिलेगी. हाउ कैन यू मास्टर ब्लॉगिंग, यूट्यूब एंड सोशल मीडिया. ठीक है. And then finally, a how-to guide on formatting strategies and techniques to make a professional document on MS Word and Google Doc. तो कंटेंट राइटिंग अच्छा है, आप अच्छा लिख देते होगे, सब कुछ है, बट इट हैज़ टू बी यूनिवर्सल. आपको शेयर भी करना है लोगों के साथ, राइट. उसको वेल फॉर्मेटेड प्रेजेंटेबल वे में कैसे करना है वो पूरा एक गाइड है, वो हम आपको गिव अवेज में कल शेयर करेंगे इफ़ यू अटेंड द बूट कैंप फॉर मोर देन 2.5 hours. हाँ, सो कल का मैंने एजेंडा आपको बता दिया है. आई सी यू ऑल एट 12 PM टुमारो, दैट इज 25th of May. अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जिसको कंटेंट राइटर्स बनना है उन सबको भी बुला लेना. लेट्स हैव अ कंटेंट राइटर्स पार्टी एट 12 टुमारो. Thank you for joining me. Thank you for all your questions. It was a wonderful dialogue with all of you, and I hope you have enjoyed it. Cheers. See you tomorrow at 12.